Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling today? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 5. My dear students, we are going to start our new chapter, unit number 12, and its title is Over-the-Counter Medicines. Yes, my dear fellow teachers, I have divided this unit according to these lectures, and I'm going to tell that how we will deliver all these lectures one by one. In our lecture number 1, under the title of Grammar, we will learn about simple future tense, my dear students, and its SLO will be used tense, simple future, previously learned in speech and writing. And in our lecture number 2, under the title of Grammar, we will learn about subject-verb agreement on page number 100, my dear students, and its SLO will be demonstrate the use of subject-verb agreement according to the person and number, recognize and use SVO pattern sentences with direct and indirect objects. So my dear students and my dear teachers, in lecture number 3, we will learn about adverbs and its different types. We will learn about adverb and its different types, and its SLO will be identify and use adverbs of manner, time, place and frequency. So my dear students and my dear teachers, in lecture number 4, we will learn about modal verbs, how we can use different modal verbs, and its SLO will be illustrate the use of can, cannot, and may not, and should not for permission, prohibition, doubt and obligation, and how we can not to express. Got it? In lecture number 5, we will learn about main verbs and helping verbs. We will learn about the use of be, do and have, and we will cover up our SLO, demonstrate the use of be, do and have along with their negative forms as main or helping verbs in sentences. So my dear students and my dear teachers, in lecture number 6, we will learn about reading, about comprehension. We will read about how we can comprehend a text, and its SLO will be scan locate the text for specific information. In our lecture number 7, my dear students, we will learn about reading and comprehension. Again, its next part, 2 parts will be there, my dear teachers and my dear students, and its next part we will also cover up in reading and comprehension, and its SLO will be apply punctuation rules to assist in developing accuracy and fluency through reading aloud. Write sentences of your own using correct capitalization, punctuation and spelling. In lecture number 8, we will learn how we can write a story. We will develop our story writing, my dear students, and its SLO will be how to retell a story briefly and sequentially, summarize a short folk tale through gapped summary exercise. So we will cover up these SLOs. My dear students and my dear teachers, in lecture number 9, under the title of Oral Communication Skills, we will learn how we can take turns to speak on a wide range of topics. And its SLO will be demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to take turns to speak on a range of topics of their own choices. So my dear students and my dear teachers, our last lecture will be lecture number 10 about writing skills. We will learn how we can develop a paragraph. And its SLO will be analyze a simple paragraph to recognize that a paragraph comprises a group of sentences that develop a single main idea. So my dear students, in this way and my dear teachers, we will cover up our complete unit according to all these SLOs. Okay, so now we are going to start. What we are going to start? Yes, demonstrate the use of be, do and ing and have along with their negative forms as main and helping verbs in their sentences. So now we are going to start our unit. Okay. So start that. Medicines are chemical compounds that are used to cure or prevent disease. When we have a headache, we can use OTC to help us. An over-the-counter medicine is sometimes called a non-prescription medicine. This is because we do not need a note from a doctor to get it. We can buy it from any pharmacy. So my dear students, ये पहला पैराग्राफ है यूनिट नंबर 12 का, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेडिसिन्स वो होती हैं जो चीज़ें हमें अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ओवर द काउंटर मेडिसिन का मतलब होता है इसके लिए हमें अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, हम ये मेडिसिन किसी भी फार्मेसी, किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए नहीं होती है ज़रूरत कि हम इसे कोई इसके लिए डॉक्टर का नोट चाहिए। तब सपोज वी हैव हेडेक, हमारे सर में दर्द है, वी हैव कफ, तो हम ये मेडिसिन
अपनी मर्जी से कोई टैबलेट्स ले सकते हैं. ओके, so there are many kinds of over-the-counter drugs. We see ads for them on the TV all the time. The most common non-prescription drugs are pain relievers. They will help us if we have a headache, sore muscles, or aching joints. These drugs can also help reduce fever, stop coughing, and runny nose. So my dear students, हम टीवी पे अखबारात में बहुत से इर्द गिर्द इसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इश्तिहारात दिखाए जाते हैं कि अगर आपको सर में दर्द है, अगर आपको फीवर फील हो रहा है, कफ है, रनी नोज़ है, तो आपने कौन सी टैबलेट लेनी है. तो ये इजीली हमें इनकी एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलती हैं और हम इसे इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से गेट कर सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं. गॉट इट? सो सच टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर कॉल्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन्स. Next is there, over-the-counter medicines can still carry risk. Even though they do not require a prescription, there is the possibility of side effects or harm due to excessive dose. One thing these OTC drugs all have in common is a label. It is important to read the label carefully before you take any medicine. It has important information on it. Yes, my dear students. So, what we are getting from this paragraph, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो ये मेडिसिन होती हैं बगैर डॉक्टर के हम लेते हैं, सम टाइम ये हमारे लिए रिस्की भी होती है, किसी न किसी खतरे का भी सबब बन सकती हैं. उसके लिए ये होता है कि कभी हम मीन्स मामूल से ज़्यादा लेते हैं टैबलेट या कोई भी सिरप, कोई भी लिक्विड जब हम पी लेते हैं, ले लेते हैं अपने मामूल से ज़्यादा, तो वो हमारे लिए रिस्की साबित होता है. सबसे पहले इनको यूज़ करने के लिए सबसे अहम क्या है, हमें उसके लेबल पे दी गई हिदायत पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है कि हमने इसे कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है. ओके, सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर वॉचिंग, वी आर गेटिंग ऑन द लेबल. गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स नेक्स्ट. Most medicines should be kept at room temperature and away from sunlight. Some must be kept in refrigerator. We should check with our pharmacist or doctor if we are not sure. Always make sure all medicines are stored safely and out of the reach of younger brothers, sisters and pets. So, अब इस पैराग्राफ में बेटा हमें बताया जा रहा है कि हमने अपनी मेडिसिन को रखना कहाँ है. कुछ ऐसी होती हैं जो बगैर रेफ्रिजरेटर के रखी जाती हैं, लाइक टैबलेट्स हो गई, तो उनको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत पेश नहीं आती. और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें हमें रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी होता है. और कुछ ऐसी होती हैं कि हमें इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. मोस्टली अगर हमारे घर में पेट्स हैं, हमारे पालतू जानवर हैं, कि हमें उनकी पहुंच से भी ये दूर होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो इसे गिरा दें या यूज़ कर लें और ये हमारे लिए नुकसान का बाइस बने. ओके, तो समटाइम हमें यूज़ भी करनी पड़ती हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन, OTC मेडिसिन. सो वी मस्ट बी केयरफुल. और इसमें जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं उन मेडिसिन को यूज़ करते हुए आपने उनको फॉलो करना है. Okay, my dear students, have you got? So this was our today's lecture. We have closed. So tomorrow we will start, inshallah, our lecture number 1. And be ready for this. Till that time, stay blessed. Thank you so much. Allah Hafiz.